Is India facing a health concern? The Union Health Ministry has deployed a high-level multidisciplinary team to Pune to assist state authorities in containing the rise in suspected, and there are some confirmed cases as well, of the Guillain-Barré Syndrome. The central team, consisting of 7 experts from the National Centre for Disease Control, the NIMHANS, Office of Health and Family Welfare, National Institute of Virology, all of these teams have been sent to Maharashtra, from where most of these cases are being confirmed. 101 cases and counting. 1 person dead. The Guillain-Barré Syndrome has Pune firmly in its grip, prompting the Union Health Ministry to send a team to the city. The rare immunological nerve disorder that causes sudden numbness and muscle weakness is not a new infection. In this condition, the body's immune system attacks the nerves. GBS usually is an autoimmune condition in which our own immune system attacks our own cells, usually the nervous system. Usually it triggers after an infection, either it is a viral infection or it is a bacterial infection. Many times we have seen whenever there is an outbreak of some infection, whether it is a viral, bacterial, usually when we see the GBS infection. Initial infective symptoms like abdominal pain and diarrhea, they subsides over a period of time, maybe in a day or two, but after 10 to 14 days, usually the GBS syndrome symptoms gets aggravated. Usually it starts with pain, tingling, weakness in the limbs, difficulty in walking. The Maharashtra government has also set up a new rapid response team to investigate the sudden rise in infection. पुणे शहर में जो GBS सिंड्रोम के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके लिए योजना करना आवश्यक है। इसके लिए आज हमने यहाँ पर इस विजिट में जो यहाँ जो हुआ है कुएं में जो पानी है उसके बारे में भी कुछ जांच चल रही है। हम लोग उसके बारे में अभी जो एक्सपर्ट का ओपिनियन आएगा उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि ये पेशेंट की जो संख्या है पेशेंट की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, साथ ही साथ जो कुछ उपाय करनी चाहिए। What is also concerning is that 16 patients diagnosed with GBS are on ventilator support. In GBS syndrome, in 20 to 30% of cases, when the symptoms gets worse, it involves the respiratory muscles. And in those patients, it requires this ventilation. Usually there are two possibilities when there is a need of mechanical ventilation, if there is involvement of respiratory muscles, in which we see in 20 to 30% of cases. Second is bulbar involvement. So that's the reason whenever there is an infection of GBS syndrome, usually we have to watch whether there is involvement of respiratory, that is whether there is a weakness, patient is able to breathe properly or not. And second is bulbar, whether he is able to swallow, whether he is having some choking spells. In those two conditions, usually they require the mechanical ventilation. पुरानी जो टंकियां थी, वो पानी की टंकियों की जगह अब बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन कुएं वैसे ही है और यहाँ ना ही पालिका की तरफ से कोई फिल्ट्रेशन प्लांट बिठाया गया है, ना ही किसी अलग तरह की कुछ व्यवस्थाएं की गई है जिससे यहाँ के नागरिक स्वच्छ पानी पी सके। अब सवाल ये बनता है कि सिंहगढ़ रोड है, खड़कवासला है और जहां मैं खड़ा हूं धायरी, वहां मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। यहाँ के लोग जितने भर्ती है सबसे ज्यादा प्राइवेट अस्पताल में है। यहाँ पे पानी डायरेक्टली डैम से आ रहा है, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, उसमें कोई भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ है और ऐसा ही पानी सीधा हमारे गांव में आता है। डायरेक्ट पंपिंग से पानी जा रहा है, टाकी में पानी खाली 20% टाकी से पानी जाता है, इसलिए वहाँ भी डायरेक्ट डैम से पानी जाने की वजह से वहाँ भी पेशेंट की बीमार संख्या ज्यादा है उधर भी। It doesn't cause death in many cases. Mostly people recover. The outbreak can be attributed to viral or bacterial infections. To keep oneself safe, cook your food very well, especially in an outbreak area. Boil your water very well before consumption. And of course, maintain basic hygiene. Avoid contamination of all kinds. With Omkar Wable in Pune, in New Delhi, Sneha Mordani for India Today TV.